सो दिस इज़ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। प्रिलिमिनरी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 to 4 कैसे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक्सटेंड टू, सो आंसर विल बी ऑल डी। सो बाकी जो हमारे ऑप्शन है उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ए में दे रखा है द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट अब ऐसा नहीं है, द होल ऑफ इंडिया है। दूसरा बुद्धिस्ट एंड जैन, those who are not Muslims, Christians, Parsis and Jews by religion। ठीक है, तो सभी में ये अप्लाई होगा। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स, दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर है बुद्धिस्ट, सिख, जैन सभी होंगे। थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाइज टू, सो पर्सन बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब। अगला क्वेश्चन है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट अप्लीकेबल टू, सो किस पे अप्लीकेबल नहीं है, द मेंबर ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदू में बी बुद्धिस्ट हो सकते हैं, जैनी हो सकते हैं, आर्य समाजी हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय, सो नन ऑफ द अबव, जैसे बर्थ, बाय कन्वर्जन और बाय रीकन्वर्जन जो होगा। ठीक है, अगला है हु इज ए हिंदू अमंग फॉलोइंग, सो आंसर विल बी लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सिख मेल एंड जैन फीमेल, बी है एन illegitimate child of Sikh male and Jain female, C है an illegitimate child of Hindu male and Parsi female, and who was brought up as a Hindu। क्वेश्चन अगला है सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड अप टू, सो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड जनरेशन थ्रू मदर। अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशनशिप बाय, सो आंसर हमारा हो जाएगा फुल ब्लड, हाफ और यूट्राइन ब्लड, अडॉप्शन। अगला क्वेश्चन है ए मैरिड बी बट द मैरिज वॉज वॉइड फॉर बीइंग विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप आफ्टर सम टाइम ए मैरिड सी वाइल बी वॉज स्टिल लिविंग विद हिम, एज मैरिज टू सी इज, तो कैसी हो जाएगी इसकी मैरिज, वैलिड हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एज पर हिंदू मैरिज एक्ट सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड टू, सो आंसर विल बी द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर एंड द फिफ्थ इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू फादर। अगला क्वेश्चन है इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज डिफाइंड अंडर, सो किस में डिफाइंड है ये 3G में। Next question in under which one of the following sections of the Hindu Marriage Act 1955 Sapinda relationship has been defined, so under section 3। Question is Sapinda relationship includes relationship by, so answer will be half or uterine blood, full blood, adoption, all of the above। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू पर्सन्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स दे आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय, सो आंसर विल बी ए हाफ ब्लडेड। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन सपिंडा रिलेशनशिप, सो आंसर विल बी सी सेक्शन 3F। अगला क्वेश्चन है सपिंडा रिलेशनशिप हैज़ बीन डिफाइंड अंडर, सो किस में डिफाइंड है सेक्शन 3F ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिगार्ड टू ए हिंदू मैरिज सपिंडा रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन इज काउंटेड अप टू, सो आंसर विल बी सी बोथ ए एंड बी। ए में लिखा हुआ है फिफ्थ जनरेशन ऑफ द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू फादर ओनली एंड थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू मदर ओनली। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एग्जेम्प्टेड इफ द कस्टम गवर्निंग ईच ऑफ द पार्टीज टू अ हिंदू मैरिज सो परमिट, सो आंसर विल बी डी द पार्टीज आर नॉट सपिंडाज ऑफ ईच अदर। अगला क्वेश्चन है a मैरिज बिटवीन अ हिंदू बॉय एज्ड 23 years एंड हिंदू गर्ल एज्ड 19 years बोथ ऑफ द सेम गोत्रा इज, तो इनकी शादी हो जाएगी वैलिड। अगला क्वेश्चन है मैरिज ऑफ ए हिंदू मेल ऑफ
Hindu male to his wife's daughter by a previous husband is. So answer will be D, void unless protected by custom or uses. अगला है सगोत्रा मैरिज अंडर हिंदू लॉ आर. सो आंसर विल बी वैलिड. अगला क्वेश्चन है a marriage of a Hindu man with the biological sister of his adopted sister is. So answer will be valid. अगला क्वेश्चन है prohibited degree and sapinda relationship are. So answer will be may overlap each other. क्वेश्चन नंबर 25 है a marriage under Hindu law between sapindas parties shall be valid. So answer will be A if the customs of use is governing each of them permits. क्वेश्चन है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड इन द लाइन ऑफ एसेंट टू. सो आंसर विल बी सी 3 डिग्रीज थ्रू द मदर एंड 5 डिग्रीज थ्रू द फादर. अगला क्वेश्चन है अ हिंदू गर्ल विशेस टू मैरी हर मदर्स सिस्टर अडॉप्टेड हिंदू सन हु हैपन्स टू बी हर चाइल्डहुड फ्रेंड सिंस द pre-adoption days. Such a marriage under Hindu law will be. So कैसी होगी ये prohibited degree of relationship. Next question is marriage of a Hindu male to his wife's mother is. So answer will be कैसा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा void unless protected by custom or uses. अगला क्वेश्चन है बॉर्न क्रिश्चियन गर्ल बॉट अप बाय अ हिंदू फैमिली मैरिड अ हिंदू बॉय एज पर सैस्ट्रिक सेरेमनीज द मैरिज इज. तो मैरिज कैसे हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी. अगला क्वेश्चन है मैरिज ऑफ अ हिंदू मेल विद द विडो ऑफ हिज फादर इज. आंसर विल बी वॉइड अनलेस प्रोटेक्टेड बाय कस्टम और यूजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदू मैरिज Act 1955 came into force on. Answer will be 18th May 1955. Question is which of the following is not included in the term of Hindu uses in Hindu Marriage Act 1955. So answer will be Parsis. अब हमारा आता है हिंदू मैरिजेस के बारे में जो कि सेक्शन 5 से 8 तक डील करता है. इसके क्वेश्चंस देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 33 इज मैरिज ऑफ ए हिंदू मेल to his wife's mother is. So answer will be void unless protected by custom or uses. Next question, a groom of 25 years marries a bride of 15 years of age under Hindu law and the marriage कैसी हो जाएगी? valid but punishable. Next question is out of the following which is not a void marriage. So answer will be D that either party is of bad character. Next question, which one of the following sections of the Hindu Marriage Act 1955 provides conditions of marriage? So answer will be C, section 5. Question is can a Hindu marry second time on the basis of written consent of his first wife? So answer will be B, no. Question is the marriage may be solemnized between two Hindus if. So answer will be bridegroom completes the age of 21 years and the bride completes 18 years. Next question is as per the Hindu Marriage Act 1955 Sagotra marriage is. So answer will be perfectly valid. Question is a second marriage of a married Hindu man contracted after his conversion to Muslim faith is. Answer will be void. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेरेमनी विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ विच अ हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड नल एंड वॉइड. सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव. कन्यादान भी नहीं होगा, सपिंडा भी नहीं होगा, इसमें सिंदूर दान भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 5(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर. सो आंसर विल बी मोनोगैमी. Question 43 is marriage between a married man and an unmarried woman is. So answer will be void. Question is which age not a condition for valid Hindu marriage. So answer will be if the age of parties is above 18 years and below 21 years of the age. Next question is which of the following is not a prerequisite
requisite for a valid marriage under the Hindu Marriage Act 1956? So answer will be C. Either of the party must be an Hindu. Next question is, a party is regarded as not having the mental capacity to solemnize the marriage if suffering from, answer will be D, all of the above, unsoundness of mind, mental disorder, insanity or epilepsy. Question is, in modern Hindu law, marriage has become so monogamous. Question 48, section 5(1) of the Hindu Marriage Act introduced, answer will be monogamy. Next question, any marriage solemnized in contravention of the conditions specified in clause 1 of section 5 of the Hindu Marriage Act 1955 shall be, answer will be B, null and void. Question is, under Hindu law, if a minor marries without the consent of the parents, guardian, the marriage would be, so answer will be C, valid. Next question, a groom of 25 years of the age marries to a bride of 15 years of age under Hindu law, this marriage is, so answer will be valid but punishable. Next question, if parties to a Hindu marriage are subpoena to each other, the marriage is, so marriage will be void. Next question, a marriage under the Hindu Marriage Act 1955 between two persons within prohibited degree of relationship is, answer will be void. Answer, next question, a groom of 22 years of age marries a bride 15 years of age, the marriage कैसे हो जाएगी, वैलिड बट पनिशेबल. अगला क्वेश्चन है, अ बॉय ऑफ 17 ईयर मैरिड अ गर्ल ऑफ 15 ईयर, द मैरिज इज सो वैलिड एंड पनिशेबल. Next question, A marries B, the widow of his elder brother. The marriage is void. Which of the following ceremonies are obligatory under Hindu Marriage Act 1955 for a valid marriage? So answer will be C, customary rites and ceremonies of either party. Next question, Kanyadan is an important ceremony in Hindu marriage. It is mandatory for a marriage to be held valid. So answer will be B, false. Next question, Hindu Marriage Act 1955. So answer will be does not prescribe the ceremonies requisite for solemnization of marriage but leaves it to the parties to choose from of ceremonial marriage which is in accordance with any custom or uses applicable to either party. Next question is, a Hindu marriage may be solemnized according to the customary rites and ceremonies of, so answer will be either party, bride and bridegroom thereto. Next question, registration of marriage has been made compulsory by Hindu Marriage Act 1955 under, so answer will be C, section 8. Next question, which section of the Hindu Marriage Act 1955 deals with the making of rules regarding registration of Hindu marriage? So answer will be section 8. अगला क्वेश्चन है, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. सो आंसर विल बी बी, डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज बट कॉल फॉर imposition of penalty. So next question, which of the following section of Hindu Marriage Act 1955 provides as to registration of marriage? So answer will be section 8. Next question, under which section of the Hindu Marriage Act 1955 the provisions relating to registration of marriage is given? So answer will be section 8. Next question, in states where compulsory registration of marriage is required, non-registration of marriage will, so answer is not affect the validity of marriage. Next question, in which of the following case the Supreme Court has directed the state and the central government to make law for compulsory registration of all marriages in India? So answer is C, Seema versus Aswani Kumar. Next question, the Supreme Court directive calls for compulsory registration of marriage was let down in, so answer is C, Seema versus Aswani Kumar.
Next question, who out of the following is not a Hindu under the Hindu Marriage Act 1955? So answer is A legitimate child whose father is a Hindu and mother a Parsi and he is brought up as a family member of the latter. Next question, which of the following is not a requirement of a valid Hindu marriage? So answer is C, consent of parties to the marriage. Next question, Hindu law is, so answer is B, personal law. Next question, which one of the following marriages is valid under Hindu law? So answer is D, all of the above, like a man marrying his deceased wife's sister, valid होगा. Next है a man marrying his divorced wife's sister, a man marrying his deceased wife's sister's daughter. ठीक है. अगला क्वेश्चन है रेस्टिट्यूशन. अगला जो हमारा चैप्टर है, अगला जो हमारा पार्ट है वो है रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट एंड जुडिशियल सेपरेशन के बारे में, जो कि सेक्शन 9 एंड 10 डील करते हैं. इनके क्वेश्चंस देखते हैं. तो क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वॉज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन AIR 1984 SC 1562 है. सो आंसर इसका सेक्शन 9 होगा. अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वॉज upheld by the Supreme Court. So answer will be B, Saroj Rani versus Sudarshan Kumar. अगला क्वेश्चन है remedy of restitution of conjugal right is aimed at. So answer is B, preserving the marriage. अगला क्वेश्चन है the constitutional validity of section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 was tested in. So answer is A, Saroj Rani versus Sudarshan AIR 1984 SC 1562. अगला क्वेश्चन है हमारा टी सरीथा वर्सेस वेनका सुबानिया इज अ केस रिलेटिंग टू conjugal right. Okay, restitution of conjugal right is available to wife and husband both. अगला क्वेश्चन है which one of the following section of the Hindu Marriage Act provides restitution of conjugal right? So answer will be section 9. अगला है section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 was held to be intra virus the constitution by the Supreme Court in the case of. So answer will be Saroj Rani versus Sudarshan Kumar. अगला क्वेश्चन है restitution of conjugal right can be claimed. So answer is B, when there is a withdrawal from the society of other without any reasonable clause. Next question, where the wife homemaker does not comply with the decree for restitution of conjugal right under section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 and instead files for divorce and maintenance, she would. So answer will be B, be entitled to claim maintenance. Next question is withdrawal from the society of other within the meaning of section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 means. So answer will be C, both A and B. Like A है refusal to have sexual intercourse, B है total repudiation of cohabitation. Next है if there is no resumption of cohabitation between the parties within 1 year after the decree of judicial separation or restitution of conjugal right, the marriage. So answer will be marriage can be dissolved by a decree of divorce on the petition presented by either party. So next question, if one of the spouse without reasonable excuse refuses to live with the other, the later can seek a degree of restitution of conjugal right. Next question, if there has been no restitution of conjugal right as between the parties to the marriage for the period of 1 year after the passing of a decree for restitution of conjugal right in proceedings to which they were parties, the marriage. So answer will be can be dissolved on a petition for dissolved by either party. Next question, a petition to restitution of conjugal right may be filed by the aggrieved party to the. Answer will be B, family court only. Next question, which section of Hindu Marriage Act provides for the restitution of conjugal rights? So answer will be section 9. Next question, under which section of the Hindu Marriage Act 1955 judicial separation has been provided? So answer is section 10. Next question, the Hindu Marriage Act 1955 contains the minimum period of
desertion for filing a suit for judicial separation is, so answer is C, 2 years. Next question, a degree of judicial separation, तो इसमें पहला पॉइंट है डिजॉल्व द मैट्रिमोनियल बॉन्ड, सेकेंड है डज नॉट डिजॉल्व द मैट्रिमोनियल बॉन्ड बट merely suspend marital rights and obligations during the subsistence of the degree, third है mandates that the parties which still continue to husband and wife but not obliged to live together, fourth है provides that if the parties have not resumed cohabitation for a period of 1 year either party may seek divorce, so answer will be D, like second, third and fourth जो हमने पढ़े थे. अगला है which of the following prerequisite is not a ground for judicial separation of a marriage, so answer will be demand for dowry. Next question, what is the effect of judicial separation on material relation under Hindu Marriage Act, so answer is B, marital relation is suspended. ठीक है. अगला क्वेश्चन है हिंदू कपल हैविंग द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन वांट टू लिव टुगेदर, सो आंसर इज डी, दे कैन लिव टुगेदर ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ द कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ईदर स्पाउस indulge in adultery, does it furnish a ground for divorce, so yes. Next question, during judicial separation the parties continue to husband and wife but marital rights and obligations are suspended. Okay. अगला क्वेश्चन है इन बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती AIR 1957 80-176 द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सप्लेन किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजर्शन. नेक्स्ट है लक्ष्मण उत्तम चंद्र कृपलानी वर्सेस मीना इज द लीडिंग डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ, सो आंसर इज बी, डिजर्शन. अगला क्वेश्चन है क्या है remarriage within 5 days of the passing of the decree of annulment of marriage under HM Act 1955 is the marriage valid होगी. ओके. अगला है अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज तो मैरिज क्या है, सैक्रामेंट है एक. ओके. 100 तक हमारे सेक्शन कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 तक हमारा कंप्लीट होता है.